Assalamu alaikum everyone, this is Shaban with a new lecture that is really informative for you. Today we will talk about the question answer from the chapter number 4, that is thank you man. So let's move towards the next questions. जी बेटे, उस दिन हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे क्वेश्चन 6 तक। हम लोगों के क्वेश्चन थे व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन द वुमन गेव हिम अ फ्यू जॉक। जब खातून ने उसे कुछ झटके दिए और उसे खूब हिलाया तो लड़की की क्या हालत थी। सो दैट वाज द क्वेश्चन लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट। So next we will start from the question, why did the woman ask the boy to wash his face? That is our next question. Let's move question number, here we have question number 7. Question number 7. Why did the woman ask, why did the woman ask, why did the woman ask the boy, why did the woman ask the boy to wash his face, to wash his face? So this is our first question of the day. आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ आज हम इसको आंसर करेंगे और दिस इज़ अवर पॉइंट हाउ टू गो फॉर द आंसर्स. सो वेलकम टू यू द यूनिवर्सल ई लर्निंग प्रोग्राम. लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर. अब देखिए बेटे, बहुत सिंपल क्वेश्चन किया गया है, हमने बहुत सिंपली तरीके से इसको आंसर करना है. क्वेश्चन पूछा गया व्हाई डिड द वुमन आस्क. देखें, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है. इट्स मीन दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट. तो जब हम पॉजिटिव आंसर करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. सो राइट, मूव टुवर्ड्स द आंसर. यस, हम बेटे आंसर लिखेंगे वेरी सिंपल आंसर. बहुत हाफ ऑफ द आंसर विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम आवर क्वेश्चन. तो हम अपने क्वेश्चन से ही आधा जो जवाब है वो सिलेक्ट कर लेंगे. वो कैसे? वेरी सिंपल. हम स्टार्ट करेंगे द वुमन आस्क्ड द बॉय टू वॉश हिज फेस. द वुमन आस्क्ड. सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे. आस्क की सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड. द वुमन आस्क्ड द बॉय. खातून ने लड़के से कहा, द बॉय टू वॉश हिज फेस. बॉय टू वॉश हिज फेस, कि वो अपना चेहरा धो ले. बिकॉज हिज फेस वॉज डर्टी. बिकॉज his face was dirty. क्योंकि उसका जो चेहरा था वो बहुत गंदा था, गदला हुआ था. That's why he asked boy to wash his face. So that was the very easy answer. So I hope you have understood well. Let's move towards the question number 8. Why didn't the boy run from the house of the woman? The question number 8. Question number 8 है हमारे पास. Why didn't? Question number 8. Why didn't the boy? Why didn't? It's mean that did not. Why didn't the boy? Why didn't the boy run from the house of the woman? Why didn't the boy run from the house of the woman? House of the woman. लड़का खातून के घर से क्यों नहीं भागा? Why didn't the boy run from the house of the woman? उस खातून के घर से लड़का क्यों नहीं भागा? The question is,
वेरी सिंपल, लेट्स बिकॉज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लड़का खातून के घर से इसलिए नहीं भागा था क्योंकि बेटे वो उसका जो ट्रस्ट है, उसका यकीन है, उसको तोड़ना नहीं चाहता था। जिसने जितने अच्छे तरीके के साथ उसने खातून ने उस लड़के के साथ बिहेव किया था, दैट वाज रियली रियली एन अमेजिंग केस। सो दैट्स व्हाई ही डिड नॉट वांट टू मिसट्रस्ट द वुमन, राइट। सो लेट्स आंसर की तरफ मूव करते हैं, आंसर की तरफ मूव करते हैं जी। तो लिखेंगे बिकॉज हेयर वी हैव द आंसर्स, हम इसका आंसर मूव करते हैं नेक्स्ट में यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे so that you can easily catch a sight of that question and answer। तो यहाँ पे हमारे पास है आंसर कि लड़का जो है वो खातून के घर से क्यों नहीं भागा था। he did not trust he did not he did not trust he did not trust the woman not to trust him। he did not trust the woman, he did not trust the woman not to trust him। he did not trust the woman not to trust him। वो नहीं चाहता था कि खातून का भरोसा तोड़ दे। नॉट टू ट्रस्ट हिम, वो नहीं चाहता था कि खातून एक ऐसा यकीन कर ले कि जिसकी वजह से उसका यकीन टूट जाए। तो दैट्स वाई ही डिड नॉट वांट टू रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमेन। जी तो बेटे ही डिड नॉट वांट, he did not trust the woman not to trust, that's why he did not run from the house of woman, that's why he did not run from the house of woman, from the house of woman। तो बेटे इस क्वेश्चन के आंसर में हम बताएंगे कि वो नहीं चाहता था कि खातून का भरोसा तोड़े, इसलिए वो खातून के घर से भागा नहीं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ वाई डिडंट द वुमेन वॉच द बॉय while preparing a dish। So question number 9, question number 9 we have question number 9, it's a really really important question। खातून ने क्यों नहीं देखा, why didn't the woman watch the boy while preparing a dish, why didn't खातून ने क्यों नहीं देखा, why didn't the boy, why didn't the woman watch, why didn't the woman watch, क्यों खातून ने नहीं देखा लड़के को, why didn't the woman watch, खातून ने क्यों नहीं देखा, why didn't the woman watch the boy, वो क्यों उसने निगरानी नहीं की, उसे देखा क्यों नहीं उस लड़के को, while preparing a dish, एक डिश को तैयार करते हुए उसने उस पर नज़र क्यों नहीं रखी। द क्वेश्चन इज प्रिपेयरिंग अ डिश, सो दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर। इसका बेटे बहुत सिंपली हम आंसर करेंगे। सो हमारे पास आंसर है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया हम उसी तरह से इसका आंसर रिप्लाई करेंगे, राइट। अपने साथ रहें। तो नेक्स्ट द आंसर इज, हमारे पास बहुत सिंपल आंसर है, डैट इज़ कि खातून ने उस लड़के पर डिश प्रिपेयर करते हुए नज़र क्यों नहीं रखी। द आंसर इज, the answer is the woman did not watch the boy to see, the woman did not
watched the boy. The woman the woman did not the woman did not watch the boy the boy the woman did not watch the boy to see ये देखने के लिए उसने उस पर नज़र नहीं रखी टू सी इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ कि कहीं अब वो भागने तो नहीं लगा इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ कि अब कहीं वो भागने तो नहीं लगा टू रन नाउ कि कहीं वो भागने तो नहीं लगा नॉट डिड शी वॉच हर पर्स ना ही बेटे उसने अपने पर्स की तरफ देखा नॉर डिड शी वॉच हर पर्स और ना ही उसने अपने पर्स की तरफ देखा खातून ने लड़के की तरफ नहीं देखा लड़के पे बिल्कुल भी निगरानी नहीं की कहीं ये देखने के लिए कि कहीं लड़का भागने तो नहीं लगा वो इसलिए क्योंकि उसे यकीन था कि लड़का भागेगा नहीं उसे इस चीज़ पे यकीन था बिकॉज आप कह सकते हैं as she was sure क्योंकि उसे यकीन था he would not run कि वो भागेगा नहीं so that was the condition that was the cause जिसकी वजह से वो लड़का वहाँ से भागा नहीं और लड़के ने जो है वो खातून का भरोसा भी नहीं तोड़ा और ख़ातून ने उस पर यकीन किया और ख़ातून ने उस पर एक कड़ी नज़र भी नहीं रखी सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन जॉब इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे देखें इट्स रियली एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव question number 10 that's really an important question ठीक है so here we are going to discuss about the question number 10 what was the nature of the woman job what was the nature what was the nature what was the nature what was nature of what was the nature of the woman jobs the woman's job of the woman's job खातून की जो जॉब थी बेटे उसकी क्या नेचर थी so let's we move towards the next box for answer here we have the answer हमारे पास बेटे इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है आपने बिल्कुल घबराना नहीं है आपके क्वेश्चन में से ही हाफ आंसर जो है वो सॉल्व कर लिया जाता है अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक आय रखते हैं उसको समझते हैं उसको कंप्रहेंड करते हैं So here, what was the nature of the woman job? So it's a really simple question and answer. You may say. So हम लिखेंगे the woman walked. The woman walked. The woman walked. खातून जॉब करती थी
The woman worked, the woman worked in a hotel. The woman worked in a hotel, beauty shop. The woman worked in a hotel, beauty shop, where all kinds of women come and go, where all kinds of women wear all kinds wear all kinds of women where all kinds of women come and go, जहाँ तमाम किस्म की जो ख़वातीन थी बेटे वो आती थी और जाती थी, came and go, came and go, जहाँ तमाम किस्म की खातून आती थी और जाती थी, came and go, where all kinds of the women came in. You may say, आप इसको बहुत आसान कर लें और भी अच्छे तरीके से, came in and out, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा प्रोफेशनली आंसर मिल जाए. came in and out, उनमें कौन कौन सी खातून थी? ब्लॉन्डेस, जिनके जो है कसरत से बाल होते थे और बूढ़े रंग के बाल, यू में से, एंड रेड हेयर्स या रेड हेयर्स यानी बूढ़े जो है रेड सुर्ख बालों वाली खातून, एंड स्पेनिश, और बेटे स्पेनिश ख़वातीन आया करती थी, एंड स्पेनिश यानी हस्पानवी ख़वातीन. So that was the answer of this one question. So here we discuss about the question and answer, and we discuss about the question answer pertaining to the chapter number 4. So bete, I hope you have understood well. I have tried my best to reply you, to impart you with the best knowledge, and see you in the very next lecture with new topic. Thank you very much. Allah Hafiz.